Students, today we'll discuss the topic that is physical properties of haloalkanes or alkyl halides. Clear? So in today's lecture we have to study the 5 main physical properties. Number 1, solubility. Number 2, density. Number 3, boiling point and melting point. Number 4, inflammability, and the last one is polarity and dipole moment. So we'll start with the first property, that is solubility. So regarding solubility, we have to do two things. First is that alkyl halides are sparingly soluble. Alkyl halides are sparingly soluble, or you can say slightly soluble in water. First we have to study this one. We have to study the reason of this. Clear? Then we'll do the second one जो study करना है. तो बेटा simple सा logic है कि alkyl halides are sparingly soluble in water because number 1, they are having no ability to form hydrogen bond with water. इनमें वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का एबिलिटी नहीं है, ठीक है. ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स, जस्ट सी आउट, ड्यू टू विच द न्यू इंटरेक्शंस बिटवीन alkyl halides एंड वाटर. जब आप मिक्स करोगे अल्काइल हैलाइड और वाटर को, तो जो आपके नए इंटरेक्शन होंगे बिटवीन द अल्काइल हैलाइड्स एंड वाटर, दीज आर वीकर देन द इंटरेक्शंस इन वाटर, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. तो बेटा सिंपल लॉजिक हमने क्या समझा कि वाटर में जो इंटरेक्शंस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड है. आई विल से दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज द सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल, दे आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स. बट जब आप एल्काइल हैलाइड के साथ मिक्स करोगे, देन व्हाट हैपन्स, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज द एल्काइल हैलाइड. नाउ दीज न्यू इंटरेक्शंस एज कंपेयर टू दीज इंटरेक्शन, आई कैन ड्रॉ हियर वाटर में जो इंटरेक्शंस थे, दीज वर हाइड्रोजन बॉन्ड. और वाटर और अल्काइल हैलाइड में जो न्यू इंटरेक्शंस होंगे, दीज न्यू इंटरेक्शंस आर वीकर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. तो सिंपल लॉजिक क्या है, कोई भी सब्सटेंस वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल कब होता है? नंबर 1, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता. अगर वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, देन व्हाट हैपन्स, जो नए इंटरेक्शन बिटवीन द कंपाउंड एंड द वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो आपके वीक इंटरेक्शन होंगे देन द हाइड्रोजन बॉन्ड जो बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो स्पेरिंगली सॉल्युबल का बिल्कुल मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि व्हेनेवर द न्यू इंटरेक्शंस बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, थोड़ा एक पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगा यहां पे, व्हेनेवर द, आई विल राइट हियर, न्यू इंटरेक्शंस बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वीक. जब भी आपके नए इंटरेक्शन वीक होंगे, देन द इंटरेक्शंस between solvent molecules, then be remember that particular solute is sparingly soluble in solvent. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शंस हैं और जो नए इंटरेक्शंस हैं उनका आपको कंपैरेटिव डेटा स्टडी करना है. और नए इंटरेक्शंस अगर आपके वीक होंगे एज कंपेयर टू जो इंटरेक्शन बिटवीन द टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, देन योर सब्सटेंस इज ऑलवेज, यू कैन से, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट. और यहां पर ऐसा ही कुछ हुआ वाटर के साथ. जब हमने अल्काइल हैलाइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो जो नए इंटरेक्शन थे वो वीकर थे एज कंपेयर टू द इंटरेक्शंस इन द water that are hydrogen bond. Therefore we can say that alkyl halides are sparingly soluble in water. This is the first generalization. Now the second that we have to study, second is
क्लोरो, ब्रोमो and iodo derivatives. Chloro, bromo and iodo derivative, just like beta if I'll take CH3Cl or I'll take CH3Br or I'll take CH3I. These are said to be chloro, bromo or iodo derivatives. Clear? These are soluble in organic solvents. ये organic solvents में soluble हैं, जस्ट लाइक एल्कोहल. एल्कोहल आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. क्लियर? जस्ट लाइक एल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन. अब देखिए, बिल्कुल पहले वाले पॉइंट से आपको कंपेयर करना है. जब आप इन क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो डेरिवेटिव को इन सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो क्वेश्चन है कि ये जो आपके सॉल्युबल क्यों हुए? क्योंकि डिसॉल्व करने के बाद जो नए इंटरेक्शंस हैं और जो पुराने इंटरेक्शन थे, पुराने इंटरेक्शन मतलब जो इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे, और जो नए इंटरेक्शंस है बिटवीन दीज आयोडो, क्लोरो एंड ब्रोमो डेरिवेटिव एंड दीज सॉल्वेंट, उन दोनों इंटरेक्शंस का मैग्नीट्यूड क्या है? वो सेम है. सो यहां पर रीजन हम बिल्कुल क्लियरली लिखेंगे, जस्ट सी आउट. रीजन इज दैट द न्यू इंटरेक्शंस बिटवीन अल्काइल, this particularly I'll write chloro, bromo or iodo derivatives, chloro, bromo and iodo derivatives, new interactions between chloro, bromo and iodo derivatives and organic solvents. These interactions are similar as that the interactions between the two organic solvents. तो जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पहले से इंटरेक्शंस है, या हम ये भी कह सकते हैं, और द इंटरेक्शंस बिटवीन द टू एल्काइल हैलाइड्स, ये भी लिया जा सकता है. क्योंकि बेटा हम स्टडी क्या करते हैं कि प्रीवियस इंटरेक्शन और बाद वाले इंटरेक्शन. तो यहां पर जो इंटरेक्शंस पहले थे बिटवीन द एल्काइल हैलाइड ले लीजिए, या आप बिटवीन द टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लीजिए, वही इंटरेक्शन डिसॉल्व होने के बाद है. देयरफॉर दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. जो पहला पॉइंट था कि व्हाई दीज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वहां पर जो पहले वाले इंटरेक्शंस थे वो आपके स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस थे, और डिसॉल्व करने के बाद जो इंटरेक्शन आए वो वीक आए. देयरफॉर दीज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. सो दिस इज वी हैव डन रिगार्डिंग द सॉल्युबिलिटी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ वी विल डू द सेकंड वन, दैट इज डेंसिटी. सो सेकंड इज डेंसिटी. All of you know density is equal to mass by volume. इस पॉइंट को ध्यान रखिए, मुझे ध्यान रखना है, डेंसिटी को एक्सप्लेन करना है. इफ द मास इंक्रीजेस द डेंसिटी इंक्रीजेस, एंड इफ द वॉल्यूम इंक्रीजेस द डेंसिटी डिक्रीजेस. क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से. रो इज द सिंबल ऑफ डेंसिटी. नाउ बिफोर वी डिस्कस ऑल दीज रिगार्डिंग द डेंसिटी, देयर इज अ वन पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस, कि जो आपके क्लोरो, क्लोरो, बिल्कुल ध्यान देना है कि बेटा जो आपके क्लोरो फ्लोरो डेरिवेटिव्स हैं, दीज आर लाइटर देन वाटर. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो इसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा वाटर. तो जो बचे हमारे, कौन कौन से बचे? ब्रोमो, आयोडो डेरिवेटिव्स एंड पॉलीहेलोजेंस. पॉलीहेलोजेंस जस्ट लाइक CH, Cl3, जिसमें एक से ज्यादा हालोजेंस हैं. दीज आर heavier than water. So पहला कंक्लूजन आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरो क्लोरो डेरिवेटिव दीज आर लाइटर देन वाटर, वेयर एज द ब्रोमो आयोडो डेरिवेटिव और द पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स दीज आर हैवियर देन वाटर. दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड. और अगर कोई लाइटर देन वाटर है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो डेंसिटी है वो लाइटर देन वाटर है, और अगर कोई हैवियर देन वाटर है तो उसकी जो डेंसिटी है दैट इज मोर देन वाटर. नाउ वी हैव टू स्टडी रिगार्डिंग द डेंसिटी. सो जो डेंसिटी है बेटा, बी रिमेंबर, it is directly proportional to atomic mass of halogen and inversely proportional to
the size of alkyl group. Keep this point in your mind, this one. So इसका मीनिंग क्या है? जैसे जैसे आपकी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा, डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी. इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना. रीजन भी बताता हूं. अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इंक्रीज होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. जब साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज क्यों होगी? साइज इंक्रीज होने से क्या होगा? जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम इंक्रीज होगी देन ऑटोमेटिकली जो डेंसिटी है वो आपकी डिक्रीज होगी. ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको फोकस करना है. नाउ वी हैव टू डू सम एग्जांपल्स. So the first example that we will discuss, we have to arrange in the order of density. Okay, so let's take the first example. First is I'll take a CH3F, CH3Cl, CH3Br and finally CH3I. So देखिए what happens. Density is directly proportional to atomic mass of halogen, inversely proportional to size of alkyl group. तो alkyl group का जो size है वो same है. ठीक है, सो लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेस. मींस फ्लोरीन से ज्यादा एटॉमिक मास क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा एटॉमिक मास ब्रोमीन, और ब्रोमीन से ज्यादा एटॉमिक मास आयोडीन. देयरफॉर द डेंसिटी इंक्रीजेस इन दिस ऑर्डर. व्हाट रीजन आई विल राइट? द डेंसिटी इंक्रीजेस इन द ऑर्डर ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. ये आपको ध्यान रखना है. दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, bromine, and in the last we are having the iodine. Now the second example that we will discuss, CH3I, then CH3 CH2I, CH3 CH2 CH2I. Now listen what happens. The halogen is same. तो बेटा ये हाइड्रोजन वाला पॉइंट तो हट गया, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. अब देखिए यहां पर जो अल्काइल ग्रुप है 1 कार्बन, 2 कार्बन अल्काइल ग्रुप, 3 कार्बन अल्काइल ग्रुप. दिस आइल से मिथाइल, दिस आइल से इथाइल एंड दिस आइल से प्रोपाइल. तो जैसे जैसे आपका अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा, अकॉर्डिंग टू दिस डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए. व्हाट इज द रीजन? जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज. मींस दिस इज द ऑर्डर. सो व्हाट विल आई राइट द एक्सप्लेनेशन? The density decreases because as the size of alkyl group increases, the volume increases and the density decreases. This you have to keep it in your mind. Now we'll discuss the third one. I am having one more. The third one is CH2Cl2, then CHCl3, then CCl4. So just see out. We'll study the first point is atomic mass of halogen. यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं. तो जैसे जैसे हाइड्रोजन के एटम्स बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली मास भी बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी. सो दिस इज लाइक दिस ऑर्डर. सो हेयर वी हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन कि एज the number of halogen atom increases, the mass of organic compound increases, and hence the density increases. So this all we have discussed about the density. एक बार थोड़ा सा फिर से देखते हैं क्या क्या स्टडी किया. Density is equal to mass by volume. Fluoro-chloro derivatives, these are lighter than water, whereas the bromo-iodo derivative and the polyhalogenated compound just like chloroform, these are heavier than water. During the you can say comparison, we have to keep in mind that the density is directly proportional to atomic mass of halogen, whereas inversely proportional to size of alkyl group. So in these examples, first we have to see कि अगर आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, या हाइड्रोजन आपका सेम था
तो वी हैव टू सी द सेकंड पॉइंट, दैट इज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप. साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज किया ड्यू टू विच वॉल्यूम इंक्रीज हुआ एंड द डेंसिटी डिक्रीजेस. एंड इन द थर्ड केस, एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेस, द मास इंक्रीजेस एंड द डेंसिटी increases. So student, this is all about the second, that is the density. Now third we will discuss, that is the boiling point and melting point. The third property, just a moment. The third property is boiling point and melting point. Now student, listen one thing before I start the topic. I'll tell you one thing. जो आपका boiling point, melting point है, it is directly proportional to the magnitude of intermolecular forces. अगर आपके कंपाउंड या मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, देन ऑब्वियसली उनका जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होगा. सो आई विल से बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर molecular forces between the molecules. सो हमें सिर्फ एक पॉइंट को देखना है कि क्या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, ठीक है. ऑन दैट बेसिस हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का कंपेरेटिव डाटा स्टडी करेंगे. सो इन दिस कैटेगरी टू थिंग्स पहले मैं आपको बताऊंगा. नंबर वन, कि जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन मीन्स यू कैन से अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है. और कार्बन हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होता, तो जो बॉन्ड है वो भी आपका पोलर बॉन्ड नहीं है. सो दे विल हैव द वान डर वाल फोर्स. सो बी क्लियर, द फोर्स ड्यू टू कार्बन चेन, कभी भी अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन चेन है तो उस कार्बन चेन की वजह से आप में कौन सी फोर्स होगी कंपाउंड में, वान डर वाल फोर्स. बी क्लियर, दैट यू हैव टू रिमेंबर. मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा. सपोज वी हैव टेकन दिस कंपाउंड CH3 CH2 COOH. नाउ दिस इज द कार्बन चेन. सो ड्यू टू दिस कार्बन चेन का मतलब यहां आप हाइड्रोकार्बन चेन से लीजिए. प्रॉपरली मैं लिखूंगा ड्यू टू हाइड्रोकार्बन चेन. अगर इसको बिल्कुल ही क्लियरली हम डिस्कस करें, हाइड्रोकार्बन चेन, तो दिस पार्ट हाइड्रोकार्बन चेन, यहां पर कौन सी फोर्स है, वान डर वाल. बाकी पार्ट पे जो होगी वो एक अलग इशू है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ड्यू टू कार्बन चेन जो फोर्स है वो कौन सी है आपकी, वान डर वाल फोर्स, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. सो अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, दे विल हैव द वान डर वाल फोर्स. नाउ विल गो टू द सेकंड जो हमारा टॉपिक है, दैट इज वी आर डिस्कसिंग इन अल्काइल हैलाइड्स. सो इफ आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, आई विल गिव यू दिस एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CH2Cl. Now see this one, due to this carbon chain, यहां तक अगर हम स्टडी करें तो वी आर हैविंग द सॉरी वान डर वाल फोर्स. Am I clear? This is the van der Waal force. But as far as I go to this part, between the carbon and the chlorine is more electronegative, so it will have the partial negative charge and carbon will have the partial positive charge. तो यहाँ पर there is a dipole. So carbon halogen या carbon chlorine bond की वजह से we are having dipole forces. In the sense कैसे? Suppose this is one CH3Cl molecule and this is another CH3Cl molecule. Later on this one now. So this is delta negative, delta positive dipole first. This is delta negative, delta positive dipole second. Clear? So what happens? इस dipole का negative इस dipole के positive को attract करेगा और इस dipole का negative इस dipole के positive को attract करेगा and they will have dipole forces. तो बेसिकली अगर बात की जाए कि हालो अल्केन्स में कौन सी फोर्सेस हैं, तो ड्यू टू कार्बन चेन वान डर वाल है और ड्यू टू आपका जो पोलर बॉन्ड है डाइपोल फोर्स. सो आई विल राइट इन अल्काइल हैलाइड नंबर वन वी आर हैविंग वान डर वाल फोर्स. नंबर टू dipole force. Now before I go to the next one, just listen one thing, कि out of these two force, van der Waal and dipole force या dipole interaction, whatever you want to write depends on you. So the magnitude of, remember one thing, magnitude of
dipole forces are more than van der Waal forces। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब एक चीज और डिस्कस करते हैं। ये जो आपकी van der Waal फोर्स है, these van der Waal force, they are directly proportional to, you can say, size और you can say surface area। तो इस पॉइंट को भी कंसिडर करते हैं कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, साइज होगा, उतना ही van der Waal फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी मोर। सो इसमें थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। सपोज आई हैव गिवन यू कि भाई फ्लोरीन, दिस आई विल गिव यू CH3Cl एंड CH3F। अब इसमें कार्बन चेन तो आपकी सेम है, 1 कार्बन चेन है, बट फ्लोरीन से बड़ा साइज किसका है? क्लोरीन। सो क्लोरीन हैज मोर साइज, सो देयरफॉर इट विल हैव मोर van der Waal फोर्स। क्लियर? चलिए दूसरा तरीका, CH3Cl CH3CH2Cl। अब यहां हाइड्रोजन आपकी सेम है, दिस इज अ 1 कार्बन चेन, दिस इज अ 2 कार्बन चेन। ऑब्वियसली जब कार्बन चेन बड़ी होगी देन इट विल हैव द मोर सरफेस एरिया एंड इट विल हैव द मोर van der Waal फोर्स। तो इसी में एक थर्ड पॉइंट वी विल डिस्कस हियर। नाउ सी दिस वेरी केयरफुली, CH3 CH2 CH2 CH2Cl, this one, and second I'll give you this one, CH3 CHCl CH2, or do one thing, this I'll make here CH3, ये बेटा ऐसे, ओके। अब देखिए इसमें there is a chain of 4 कार्बन एटम, here is a chain of 3 कार्बन एटम। तो आपको अगर साइज में आइडेंटिफाई करना है तो बी क्लियर, अगर कार्बन चेन में कार्बन एटम ज्यादा है देन इट विल हैव द मोर साइज। यहां 3 कार्बन एटम है, इट विल हैव द लेस साइज। सो दिस विल हैव द मोर van der Waal force and this will have the less van der Waal force। So before we go to the detail that I will increase, will arrange the compound in the increasing order of boiling point and melting point, just take a revision what we have done। Hydrocarbon, they will have the van der Waal force, clear। Alkyl halide, they will have the van der Waal force as well as dipole force। The magnitude of dipole force is greater than the van der Waal force and the van der Waal force is directly proportional to the size or surface area। तो जैसे जैसे साइज या सरफेस एरिया बढ़ेगा the magnitude of van der Waal force increases। Regarding the organic compound, आप साइज कैसे फाइंड आउट करोगे? You have to see the carbon chain। If the carbon chain is bigger then obviously it will have the more size and it will have the more van der Waal force। So this is regarding the theoretical part, students। Now we will discuss the, you can say, conceptual part, that is just see now। So just we'll rub out this, then we'll discuss one by one। This is, so by remembering these points we have to answer some of the questions। So I'll discuss one by one। So you can say these are the examples or I'll simply say these are the questions also। तो first में जो है that I'll discuss between the methane and methyl chloride which has more boiling point and melting point। So you know that in the methane it will have the only van der Waal force, whereas methyl chloride is concerned, यहां पर इस कार्बन चेन की वजह से we are having van der Waal force and due to carbon chlorine bond we will have the dipole force। So obviously in this compound the magnitude of intermolecular force is more, magnitude of intermolecular force is more, hence it will have the more melting point and boiling point। So this is the first part। Now second, in the second I have to arrange in the order of boiling point and melting point। We have to arrange them in the order of boiling point and melting point। So just see the first thing given to us, the first example, CH4, then I'll have
CH3Cl, then I'll have CH3Br, then I'll have CH3I. सो बेटा यहां पे कौन सी फोर्स है मीथेन में? वॉन्डरवाल फोर्स, क्लियर। और इन तीनों में क्या है? वॉन्डरवाल प्लस डाइपोल डाइपोल। सो इन तीनों का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे क्या हो गया? ज्यादा। अब इन तीनों में कंपेयर करना है, क्योंकि इन तीनों में कौन सी फोर्स है? वॉन्डरवाल प्लस डाइपोल डाइपोल, एंड हियर देयर इज द फोर्स ओनली वॉन्डरवाल। अब यहां पर जैसे क्लोरीन से बड़ा साइज ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा साइज आयोडीन, सो एज द साइज ऑफ halogen increases, the magnitude of van der Waals force increases, and hence boiling point, melting point increases. So this will be the order in the second example or second question. Now see third part, इसी का next. So in the next part we will be given CH3Cl, then it is CH2Cl2, then CHCl3, and finally I'll got CCl4. Clear to all of you? चलिए अब यहां पर देखिए there is a single carbon chain, तो van der Waals force का इशू, ओके। नाउ van der Waals force ड्यू टू कार्बन चेन इज ओके। अब देखिए यहां पर एक हलोजन है, यहां पर दो हलोजन है, यहां पे तीन हलोजन है, यहां पे चार हलोजन है। तो जैसे जैसे हलोजन एटम का नंबर बढ़ेगा मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होगा। सो एज द नंबर ऑफ हलोजन इंक्रीजेस, size of organic compound increases, hence magnitude of van der Waals force increases and boiling point, melting point increases. This is clear. So after that we have to discuss one more, sorry चलिए two example discuss करेंगे so that it will be exactly clear to us. Now the next is, this is CH3Cl, CH3 CH2Cl, CH3 CH2 CH2Cl, and I'll give you in the last CH3 CH2 CH2 CH2Cl. This is methyl chloride, ethyl chloride, N-propyl chloride and N-butyl chloride. So here there is a single carbon chain, 2 carbon chain, 3 carbon chain and 4 carbon chain, और हलोजन आपकी सेम है। तो जैसे जैसे कार्बन चेन में नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। ठीक है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हुआ, क्यों इंक्रीज हुआ? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन। सो बेटा साइज इंक्रीज होगा, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waals force increases and hence melting point, boiling point also increases. So I'll got this order. This is clear to all of you. So after that we are having the next example. So the next example is this one, CH3 CH2 CH2 CH2Cl, then CH3 okay, this one, and CH3 CH2 CH2Cl. चलिए इन तीनों एग्जांपल्स में करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है बेटा, हम इनको नंबर देंगे। दिस आई गिव यू द नंबर ए, दिस आई गिव नंबर बी एंड दिस इज द सी। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कार्बन चेन, स्ट्रेट कार्बन चेन की बात करें या पूरे मॉलिक्यूल की बात करें, तो यहां पर देखिए कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम। यहां पर कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम। और यहां पर भी टोटल अगर डिस्कस किया जाए तो 4 कार्बन एटम। तो सबसे पहले आपको देखना है यहां पर भी 4 कार्बन एटम है, यहां पर भी 4 है, यहां पर 3 कार्बन एटम है। तो यहां पर जो होगा, जो साइज होगा वो क्या होगा, सबसे लेस। ड्यू टू लेस साइज इट हैज लेस van der Waals force and it has the less
यू कैन से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले मैंने लिखा C को। अब इन दोनों में 4 कार्बन एटम है, तो इसकी अगर आप चेन को देखो, इसकी चेन में 4 कार्बन एटम है, इसकी चेन में 3 कार्बन एटम है। सो ड्यू टू लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन, इट हैज लेस सरफेस एरिया, ड्यू टू इट हैज less magnitude of van der Waals force, and it has less boiling point, melting point. So C के बाद B और B के बाद A, this is the order। ठीक है, सो बिल्कुल क्लियर कीजिए। पहले मैंने 3 कार्बन वाले को सबसे कम लिया, फिर जिनमें 4 कार्बन एटम थे, फिर हमने देखा इसमें आपकी चेन 4 कार्बन की, इसमें आपकी चेन 3 कार्बन की है, तो चेन में कार्बन एटम कम हो गए तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waals फोर्स भी कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी आपका कम होगा। सो दिस इज स्टूडेंट रिगार्डिंग द कंप्लीट, दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। नाउ विल शिफ्ट टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज इनफ्लेमेबिलिटी। जस्ट सी आउट द फोर्थ वन। The fourth property is inflammability. Now fourth one is inflammability. So this property, inflammability, this is inversely proportional to number of halogen atoms. This thing you have to keep in your mind. So as the number of halogen atom increases, the inflammability decreases. So I'll do one question. CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 and CCl4. अब इसमें देखिए, there is 1 halogen atom, 2 halogen atom, 3 halogen atom, 4 halogen atom. So from left to right, what happens? Number of halogen atom increases. So as the number of halogen atom increases, the inflammability, what I say, decreases. So this I got the order. So this is the, you can say, fourth property. Now we have to do the last one, that is a polarity and the dipole moment. Number fifth. Number fifth, polarity and dipole moment. So students, all of you know that in the alkyl halides, the carbon halogen bond, means it may be Cl, it may be F, it may be Br, or it may be Fi, whatever it is. So these halogens, chlorine, fluorine, bromine, iodine, जो भी हो, these are always more electronegative than carbon, due to which it will have the partial negative charge and carbon will have the partial positive charge. So this carbon halogen bond, CX bond की बात करें, it is polar in nature. और ये polar nature किस लिए है? It is due to electronegativity difference between the carbon and halogen. कार्बन और हालोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है. हालोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर आई विल गेट अ पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू विच द बॉन्ड इज पोलर. ठीक है, सो यहां पर हमें स्टडी करना है. पोलैरिटी का रीजन हमें स्टडी हो गया, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. और अगर कोई बॉन्ड आपका पोलर है सो वहां पर आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो. म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी. क्यू इज द चार्ज एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. क्लियर? सो दोनों चीजें अब आपको मैं बता दूं कि जो पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, इसमें बहुत ध्यान आपको क्या रखना है कि पोलैरिटी किस वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल पोलर होगा तो वो उसमें डाइपोल मोमेंट होगा, तो वी कैन से डाइपोल मोमेंट भी किस वजह से है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. सो दीज बोथ फैक्टर्स, पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट in alkyl halides, these are due to electronegativity difference between the carbon and halogen. Clear to all of you? So now let's
do simple one question. First, I'll arrange in the order of polarity. Arrange in the order of polarity. So इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपका पोलैरिटी या डायपोल मोमेंट है, these both are directly proportional to electronegativity of halogen. जितना हालोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है ना, उतना ही आपका कार्बन हालोजन बॉन्ड पोलर होगा, और जितना पोलर होगा उतना डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है फ्लोरीन, इससे कम क्लोरीन, then bromine, and the least electronegative is iodine. So we have to arrange in the order of polarity. So I'll give you the compounds: CH3F, CH3Cl, CH3Br and CH3I. इसमें अरेंज करना है. So fluorine, chlorine, bromine, iodine. See these halogens. The you can say polarity and dipole moment both are directly proportional to electronegativity of the halogen. So electronegativity of halogen decreases from fluorine to chlorine to bromine to iodine. Therefore, what I say, polarity also decreases. This is the order. Am I clear to all of you? Chaliye. Now the second part, that is the arrange in the order of, in place of polarity, if I say arrange in the order of dipole moment, then what will I do? थोड़ा थोड़ा ऑर्डर बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफर यहाँ पे आएगा लास्ट में, थोड़ा मैं क्लियर करूँगा इस ऑर्डर को. यहाँ पर हमने अभी स्टडी किया था ऑर्डर, थोड़ा यहाँ से रब करते हैं, थोड़ा डिटेल में लेंगे इसको. दिस इज द कंपाउंड दैट आर गिवन टू अस, दिस वन एंड दिस वन, CH3I. So we know that this dipole moment and polarity both are directly proportional to the electronegativity of the halogen. So I say the electronegativity of halogen, it decreases from fluorine to chlorine to bromine to iodine. Therefore polarity and dipole moment also decreases. होना चाहिए डिक्रीज, यानी मुझे ये ऑर्डर मिलना चाहिए. बट एक थोड़ा सा इशू है कि यहाँ पर जब हम बात करेंगे मिथाइल फ्लोराइड और मिथाइल क्लोराइड की, तो जो मिथाइल फ्लोराइड है इसका डायपोल मोमेंट मिथाइल क्लोराइड से कम है. इस पॉइंट पे फोकस करना है. रीजन बताता हूँ. देखिए, जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड को देखिए और यहाँ पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को देखिए, तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा ड्यू टू डी इज मोर, ड्यू टू मोर बॉन्ड लेंथ. कार्बन फ्लोरीन में कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ छोटा है, ड्यू टू विच जो डी होगा वो कम होगा. और डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू डी. अब यहाँ ये जो डी की वैल्यू है ये ज़्यादा है क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा. फ्लोरीन का साइज कम है, ड्यू टू CF बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी, तो डी की वैल्यू कम होगी. देन ऑब्वियसली जो आपका डायपोल मोमेंट है दैट इज म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम. तो यहाँ पर ध्यान रखना, फ्लोरीन क्लोरीन के केस में जब आप डायपोल मोमेंट को अरेंज करोगे तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर काउंट नहीं होगा, तो इसको आपको अलग से करना है. बी क्लियर, ठीक है. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यू कैन से haloalkane और alkyl halides, and today we have completed these 5 properties: solubility, density, boiling point, melting point, inflammability, and finally the polarity and dipole moment. So that's all about.